Hello and welcome back to Mech Zone. In the previous lectures of differential equations, we have already studied the entire theory and we have also solved some numerical examples from the previous years of examinations. And today we shall be discussing about the important numericals that have been asked in GATE, ESE and public sector examinations. Mech Zone is the only channel on YouTube which is providing the entire study material and that too quality video lectures also to the aspirants of mechanical engineering who wish to prepare for various competitive examinations. So I would like to request you all कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी बताइए so that they are also benefited. So let us start with the first problem of the day, and we have been asked the following differential equation has the degree and order. Now we have been given this differential equation and we have to find out what is the degree and the order of the differential equation. Now from this equation we can clearly see that the highest derivative is of the second order. Okay, d square y upon dt square, and this is the derivative of the first order. So highest derivative is of the order 2, so answer would be order of 2. So here is order 1, 3, 3 and 2. So only B option is correct. But if we look, the degree of this highest derivative is 1. But here it has been given 3. So this option was actually given wrong. But still those who attempted this question and gave the answer as B, they got the marks, and those who left it. तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है दैट इज बी ऑप्शन. तो हालांकि इसमें डिग्री गलत दी हुई है बट यही आंसर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर बताना है. यू सिंपली हैव टू डिटरमिन द ऑर्डर, एंड इन द इक्वेशन वी कैन सी दैट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 because it is d square y upon dt square, and this is the first order derivative, that is dy by dt. Hence the answer is 2. Okay, so the answer for the first question is B and the answer for the second question is also B. So here are the solutions which I have already explained. Now let us do next question. The question that has been given is d square y upon dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equals to 0. Now we have to find out the solution of the differential equation, and we have already studied that the differential equation solution consists of two parts, that is the complementary function and the particular integral. Okay, and since the right hand side is equals to 0, therefore particular integral is 0. We simply have to find out the complementary function. So in order to find out the complementary function, we will first find, or we will first form the auxiliary equation, that is d square minus 5d plus 6 is equals to 0, and we will find out the roots of the equation. And on finding out the roots, we will notice that these roots are unequal and real. So unequal and real roots simply can be represented by c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x, where m1 and m2 will be the roots of the equation. But you can see here that instead of c1 and c2 we have used e, so that doesn't make any difference because e is also a constant here. So in this particular equation we will first find the auxiliary equation, and the roots of the auxiliary equation are 2 and 3, and hence the solution is c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x. Okay, so this becomes the solution of the third question. Now the next question, d square y by dx square plus k square y is equal to 0. The boundary conditions have been given as y is equal to 0 for x is equals to 0 and y is equal to 0 for x is equals to a. The form of non-zero solutions of y where m varies all over the integers r. Okay, so first what we will do is we will find out the solution of the equation, and the solution would be complementary function plus the particular integral. Now since the right hand side is equals to 0, the particular integral would be simply 0, and the roots would be d square plus k square is equals to 0. Okay, so we will find out that the complementary function would be y is equals to c1 cos kx plus c2 sin kx. Why? Because the roots would be imaginary in nature according to the auxiliary equation, and in this complementary function we will keep the boundary values. Okay, now on keeping the boundary values,
that is at x is equals to 0, y is also 0. So y is equals to 0 is equals to c1 cos 0 plus c2 sin 0. Now c2 sin 0 would be 0 and cos 0 is 1. So it would be c1 is equals to 0. Okay, so c1 would be equals to 0, and on keeping the other equation, on keeping the other boundary condition, the value of c1 can also be determined. Okay, so what we will do is, अगर हम अपना सेकेंड बाउंड्री कंडीशन भी इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि C2 हमारा 0 है. ठीक है, C2 भी हमारा 0 आ रहा है. तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सिंस C2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा साइन KA इज इक्वल टू 0. अब नाउ साइन KA is equals to 0 and we know that sine is 0 at the multiples of pi. So sine would be 0 at 0, pi, 2 pi and 3 pi and so on. So sine KA would be equals to sine n pi and KA would be equals to n pi such that K is equals to n pi by A. Okay, so we will keep the value of K in this equation number 2 and we will find that y is equal to C2 sine n pi x upon A will be the solution for the corresponding equation. Okay, so this was also a very interesting question and these have been asked in the previous GATE examinations. Now let us look at another question, that is dx by dt plus 3x is equals to 0. Now here instead of y and x we are using x and t such that the dependent variable is x and the independent variable is t. Okay, which of the following is a solution? So dx by dt plus 3x is equals to 0. Since the right hand side is 0, the particular integral will be simply 0. Okay, and the auxiliary equation would be d plus 3x is equals to 0 or d plus 3 is equals to 0. Okay, now since d plus 3 would be equals to 0, so on solving for the complementary function we will find that the root of the auxiliary equation is equals to minus 3 and we will obtain only one root, and the solution, that is the complementary function, would be written in the terms of x is equals to c1 e to the power minus mx, where m would be equal to minus 3. Okay, so we can see that only option B is most appropriate for this complementary function, hence B would be the answer. But since here 2 is written, so 2 can if any numeric digit like 2, 3, 4, 5 or anything can be written, then also the answer would be this. It is simply because 2 is actually acting as a constant, and in the equation, that is y is equals to c1 e to the power mx, c was also the constant. Okay, so next question that we have, a function n of x satisfies the differential equation d square n upon dx square minus n upon l square is equals to 0, where l is a constant. The boundary conditions have been given and we have to find out the solution of the equation. Now instead of x and y, we have been given d square n upon dx square minus n upon l square x is equals to 0. Now since the right hand side is 0, the solution becomes very simple because particular integral would be simply 0, and the auxiliary equation would be d square minus n upon l square, this would be equals to 0. Okay, and d would be simply plus minus under root n upon l. Okay, so d would be simply plus minus under root n upon l. That means the roots would be imaginary. Okay, the roots would be imaginary, and we will write down these roots in their conjugate pairs, and instead we can also simplify this equation. Say we can take x here and instead of x we can take y, so this equation would be very very similar. Okay, so the roots of the complementary equation would be plus minus 1 upon L. तो हमारे जो रूट्स हो जाएंगे प्लस माइनस 1 अपॉन L, तो रूट्स सॉरी मैंने आप बाय मिस्टेक बता दिया कि रूट्स वुड बी इमेजिनरी नहीं होंगे सॉल्व करने पर हमारा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे प्लस 1 अपॉन L एंड माइनस 1 अपॉन L. तो प्लस 1 अपॉन L और माइनस 1 अपॉन L के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सोल्यूशन जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे n इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस x अपॉन L प्लस c2 e to the power x upon
L, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में we will keep the boundary values that for x is equals to 0, n is equals to k, and for x is equals to infinite, n would be equals to 0. So on keeping the values of the boundary conditions and finally solving, we will find that the answer D is the most appropriate one, that is n is equals to k e to the power minus x by L would be the answer. And we have to remember some data here, that is e to the power infinity is infinity, e to the power 0 is 1, e to the power minus infinity is 0. बस हमें यहाँ पर एक चीज़ यही याद रखनी है and the question would be very simple. Okay, now let us see the next question. And in the next question we have been given, we have to find out the solution of the differential equation dy by dx is equals to y square with initial value y is equals to 0 bounded in the interval. Okay, so this is a very simple question. We simply have to solve it the way we have been solving. So we have been given that dy by dx is equals to y square. So this is simply a variable separable case. We will take all the terms of y on one side and all the terms of x on the other side, and we will simply integrate. On integration we will find that this y is equals to minus 1 upon x plus c, where c is the constant. Now the value of the constant can be simply determined by keeping the boundary conditions, and the value of c is coming out to be minus 1. Now y is equals to minus 1 upon x minus 1. Now since the denominator cannot be 0, so for denominator to become 0, x should not be equals to 1. So if x should not be equals to 1, then x should be either less than 1 or either greater than 1, because in the first condition 1 is also included, in this condition also 1 is also included, and in the D condition also 1 is included. So the next question, x into dy by dx plus y is equals to x to the power 4. So the first step is to divide the entire equation by x. So we will obtain as dy by dx plus y by x is equals to x cube, and hence this would be reduced to the order of the form dy by dx plus py is equals to q. And we already know how to solve this type of equation, that is we will have the integrating function, that is e to the power integral p dx, where the value of p here is 1 upon x. So we will multiply with the integrating factor on both the sides of the equation, and we will simply solve it. And we have been given the boundary condition also, and by using this boundary condition we will be able to find out the value of the constant. And on keeping the value of the constant, we will have y is equals to x to the power 4 upon 5 plus 1 upon x. So the correct answer would be A. Okay, now let us look at another question. This is also a very important question which has been asked. The complete solution of the ordinary differential equation d square y by dx square plus p into dy by dx plus qy is equal to 0 is, the solution has been given c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus x, and we have to find out the values of p and q. Okay, so we will first form the auxiliary equation, that is d square plus py plus q is equals to 0. Okay, and we know that in the quadratic equation the formula for sum of roots and the product of roots, sum of the roots is equals to minus b by a. So minus b by a would be minus p upon 1, and product of roots is equals to c by a. So product of roots, that would be c by a, that means q by 1. So by using this concept we will be able to find out that from the in this question we have been given that minus x and minus x, ये minus नहीं है, actually ये minus x है और e to the power minus 3x है. ठीक है, तो रूट्स क्या क्या हो गए हमारे, रूट्स हो गए माइनस 1 और माइनस 3. तो माइनस 1 और माइनस 3 दो हमें रूट्स पता चल गए, तो फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी बाई ए. वहां से हमें वैल्यू हमारी पता चल जाएगी. ओके, अब नाउ p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ चुकी है. द वैल्यू ऑफ p वुड बी 4 एंड द वैल्यू ऑफ q वुड बी सिंपली 3,
And in this question we have been given d square y by dx square plus p dy by dx plus q plus 1 would be 0. तो q की वैल्यू जब हमें पता चल चुकी है तो वो हम यहाँ पर रख देंगे, दैट इज q की वैल्यू है हमारी 3. तो हमारी जो नई इक्वेशन बन गई दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0. तो हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा वी आर गेटिंग टू इक्वल रूट्स, ठीक है, एंड दैट इज वाई द फॉर्मूला वुड बी y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर -2x. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन. और सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, c1 इंटू ई टू द पावर -2x एंड c2x इंटू ई टू द पावर -2x. तो c1 और c2 हमारे कांस्टेंट हैं, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया, c1 हमने नहीं लिखा, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम c2 को ड्रॉप करके सिर्फ x इंटू ई टू द पावर -2x को हमने एक्सेप्ट कर लिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड 2 times, I think 2 or 3 times पूछा गया है. ब्लासियस इक्वेशन d क्यूब f अपॉन डी एन क्यूब प्लस f बाई 2 इंटू डी स्क्वायर f अपॉन डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ना क्योंकि एक ना एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो पहली बात तो ये है कि आपकी ये इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकती. ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये आपकी लीनियर नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इज रूल्ड आउट एंड ऑप्शन, हाँ सिर्फ सी ऑप्शन आपका रूल्ड आउट हो गया. अब बात है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने की. द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 2, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, तो थर्ड ऑर्डर हो गया. तो थर्ड ऑर्डर अगर आपका हो गया और सी ऑप्शन नहीं है और हमें पता है ये नॉन लीनियर है, तो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी व्हाट इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, now the next question, the partial differential equation del square phi upon del x square plus del square phi upon del y square plus del phi by del x plus del phi by del y is equals to 0. okay, now we can see here that यहाँ पर जो हमारे partial derivative हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में लिया गया है, एक बार y के रिस्पेक्ट में लिया गया है. ओके, एंड डिग्री बताना है और ऑर्डर बताना है. ऑर्डर तो डेफिनेटली आपका क्या होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर में भी देखें तो ऑर्डर हमारा 2 ही होगा. ठीक है, अब बात आई डिग्री की, तो डिग्री डेफिनेटली 1 है, क्योंकि दीज आर रेज्ड टू द पावर ऑफ 1. हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स सिंपली A. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड मैच द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ग्रुप 1 टू द फैमिली. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेबल से y यहाँ पर आ जाएगा, x को ऊपर लाएंगे, दोनों साइड log लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपली एक इक्वेशन मिलेगी, जो कि इक्वेशन या तो एक सर्कल की हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो हाइपरबोला हो सकता है. ठीक है, हाइपरबोला, देखिए सर्कल की इक्वेशन तो समथिंग ऑर्डर होती है, मतलब इस टाइप की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की. वेयरएज हाइपरबोला की इक्वेशन तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगी. तो जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए जैसा मैंने आपको बताया वेरिएबल सेपरेबल से, तो यहाँ पर आपको मिला y इज इक्वल्स टू xc. तो ये तो है आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. जबकि आपने इसको जब सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो गया हमारा हाइपरबोला. और ये भी है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आपका हाइपरबोला की ही इक्वेशन है. वेयरएज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गई हमारी सर्कल की इक्वेशन. तो ये तो था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि सिविल 2009 में पूछा गया. नेक्स्ट इज फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 17y इज इक्वल टू 0 एंड बाउंड्री कंडीशंस भी हमें दे दी गई. तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द auxiliary equation, and the auxiliary equation would be d square plus 2d plus 17 is equals to 0. और वहाँ से हमें रूट्स डिटर्मिन करने पड़ेंगे, और रूट्स को डिटर्मिन करने के लिए हमने श्रीधर आचार्य मेथड से हमने रूट्स निकाले. तो रूट्स आ रहे हैं -1 प्लस -4i. और अगर ऐसा होता है, ये मतलब रूट्स तो हमारे कॉन्जुगेट होंगे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4. तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस
C2 sin बीटा x, बीटा की वैल्यू 4 है तो वही हमने पुट कर दिया। फिर बाउंड्री कंडीशंस को भी लगा के हमने जब पूरा सॉल्व किया वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारा आंसर हमें मिलेगा द ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से आपसे हो जाएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। I hope the problems that have been discussed here will help you definitely to grasp some good points about differential equations. However, we'll be solving much more problems on differential equation in the next lecture also. So thank you for today.